Hi guys and welcome back to yet another exciting episode of Female Cricket Life। आज के शो में हम डिस्कस करेंगे कल का मैच जो हुआ था आरसीबी और गुजरात जायंट्स के बीच। फिर हम डिस्कस करेंगे आज का मैच जो होगा मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के बीच। पहले रिकैप करते हैं आरसीबी और गुजरात जायंट्स के मुकाबले को। आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। रेणुका सिंह ने आरसीबी को बेहतरीन शुरुआत दी और पारी की तीसरी ओवर में बेथ मूनी को चलता किया। रेणुका सिंह और सोफी मोलिन्यू ने इंश्योर किया कि गुजरात जायंट्स एक बिलो बार टोटल रजिस्टर करे। रेणुका सिंह ने 2 विकेट्स लिए और सोफी मोलिन्यू ने 3 विकेट्स लिए। गुजरात के लिए हरलीन देओल ने 22 रन की पारी खेली और दयालन हेमलता ने 31 रन की पारी खेली, जिसके चलते गुजरात जायंट्स ने एक 107 रन का टोटल बोर्ड पर रखा। एक अंडर पार स्कोर को आरसीबी ने काफी आसानी से चेस कर दिया विद 45 बॉल्स पर। स्मृति मंधाना और मेघना सबनेनी ने 43 रन और 36 रन की पारी खेली। सोफी डिवाइन फिर एक बार निराशाजनक तरीके से आउट हुई। एरिस पेरी ने 23 रन की नाबाद पारी खेली और मैच को अपने अंजाम तक पहुंचाया। जूली, आपका क्या कहना है कल जो मैच हुआ उस बारे में? व्हाट इज योर रीडिंग ऑफ द एंटायर आरसीबी's ओवरऑल परफॉर्मेंस? आई थिंक क्लिनिकल परफॉर्मेंस रहा था आरसीबी से अगर हम देखें तो, एंड दे हैव मेड इट 2-2 नाउ। और पिछला सीजन अगर हमें याद हो तो 8 में से केवल 2 मैचेस ही जीत पाए थे और इस सीजन ऑलरेडी उन्होंने 2 मैचेस में 2 जीत हासिल कर लिए, तो बहुत अच्छे साइंस है ये आरसीबी के लिए भी। और अगर हम ऑफ द फील्ड भी उनकी टीम को अगर देखें तो काफी अच्छा माहौल है और आई थिंक जो एटमॉस्फेयर अगर ऑफ द पिच अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली ऑन द फील्ड भी वो परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट हो जाता है। तो वैसे ही कुछ आई थिंक आरसीबी के साथ इस सीजन हो रहा है और अच्छा प्रदर्शन रहा। बट कमिंग बैक टू द मैच अगेंस्ट जीजी, आई थिंक गुजरात जायंट्स, जैसे कि कल हमने बात करी थी प्रतीक और यजाद की, अगर गुजरात जायंट्स पहले बल्लेबाजी करेंगी तो ऑब्वियसली और एक लो स्कोरिंग कॉन्टेस्ट हम देख पाएंगे और वैसे ही कुछ हुआ। अगेन ऑब्वियस रीजंस थे, ओपनिंग पेयर अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, 2 मैचेस हो चुके हैं पर अभी भी जीजी की ओपनिंग पेयर हमें पता नहीं क्या होने वाली है। कल और एक सरप्राइज आई थिंक गुजरात जायंट्स ने थ्रो करा था हमारे सामने। हरलीन देओल आए थे ओपनिंग करने के लिए कप्तान बेथ मूनी के साथ, तो और एक आई थिंक सरप्राइज पैकेज, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था, क्योंकि हरलीन देओल नंबर 3 पे अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी पर उनको अभी ओपनिंग का रोल दिया गया है। अभी देखते हैं कि तीसरे मैच में कौन ओपन करने आता है। पर ओवरऑल अगर हम मैच की बात करें तो बहुत ही खराब प्रदर्शन गुजरात जायंट्स के बैटर्स से भी हम कहेंगे और बॉलर्स से भी। और कैप्टनशिप, आई थिंक यहाँ पे अगर बेथ मूनी की कैप्टनशिप थोड़ी प्रोएक्टिव होती तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट हो सकता था, क्योंकि हम लाइक एज कॉमनर्स भी बात कर रहे थे कि आई थिंक इट वाज अ नो ब्रेनर कि एशले गार्डनर से शुरुआत करे गेंदबाजी की, पर वैसे कुछ हुआ नहीं। एशले गार्डनर को चौथे ओवर में इंट्रोड्यूस करा और हमने सब देखा कि वो जब चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए, दूसरे बॉल में उन्होंने सोफी डिवाइन को पेविलियन वापस भेजा। तो अगर एशले गार्डनर से शुरुआत करते तो शायद स्मृति मंधाना शी वुड नॉट हैव बीन एबल टू गेट हर आई इन और पहले 3 ओवर में 30 रन भी नहीं कर पाती आरसीबी। आई एम अज्यूमिंग ऐसे नहीं होता, पर अगर वैसे नहीं हुआ इसीलिए आई थिंक आरसीबी कुड रन अवे विद द मैच। बट ऑल क्रेडिट टू आरसीबी बैटर्स, स्पेशली स्मृति मंधाना। एक कैप्टन इनिंग्स उनके बल्ले से हमने देखी, 43 रनों की पारी केवल 27 गेंदों में आई और अच्छे शॉट्स के लिए उन्होंने चौके और एक छक्का भी लगाया उनके पारी में। और उसके बाद सबीनेनी मेघना, आई थिंक शी पिक्ड अप फ्रॉम वेयर शी हैड लेफ्ट इन द प्रीवियस मैच, और एक अच्छी पारी। और एलिस पेरी ऑफ कोर्स जो रन्स नहीं बना पाई थी पहले मैच के अंदर, तो दूसरे मैच में उन्होंने अच्छे रन्स कंट्रीब्यूट करे, नाबाद पारी भी खेली। और रेणुका सिंह ठाकुर, आई थिंक उनके ऊपर काफी फोकस था कि क्या वो नई गेंद से अच्छे विकेट्स चटका पाएंगी, जल्दी विकेट्स या ब्रेक थ्रूज दिला पाएंगी आरसीबी को। तो अच्छा प्रदर्शन, 2 विकेट्स उन्होंने लिए, प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला उनको। और जो अराउंड द विकेट उन्होंने गेंदबाजी करी, मेरे ख्याल से वो काफी इंप्रेसिव रहा। और जैसे कि उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के वक्त भी कहा कि ट्रॉय पूली जो उनके बॉलिंग कोच रहे थे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए इंडियन टीम के लिए,
तो आई थिंक उनका रोल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा रेणुका सिंह ठाकुर को एज़ अ बॉलर और अच्छा डेवलप करने में। और सोफी मौलिनी जैसे कि हमने बात करी थी कि 3 विकेट्स भी चटकाए, तो ऑल इन ऑल आरसीबी के लिए बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। आई थिंक 10 ऑन 10 उनको ज़रूर मिलेगा इस प्रदर्शन के लिए, और आने वाला सीज़न भी काफ़ी अच्छा हो सकता है उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल लाइक लास्ट टाइम हमेशा ऐसा ही रहा है ऑफ आरसीबी वेदर इट बी द मेंस और द वुमेन्स टीम कि दे हैव ऑल द प्लेयर्स इन द प्लेस बट they are not coming together as a unit like they have brilliant individuals but somewhere as a team they are lacking but इस season कुछ और चित्र है हमारे सामने कि आरसीबी के players are playing as a unit rather than the spectacular individuals that they usually are. Pratik, what would you want to tell us about yesterday's match? Well, the way Gujarat Giants threw a surprise with their batting order, I think all of us, weren't ready for that. There's currently like a snake and ladders going on with their batting order. They're still trying and testing, and somewhere I feel that that did not work in their favor because players need to get accustomed to their batting position, and that is something that did not happen. And I think that RCB made good use of this. Starting off with Renuka Thakur, the way she bowled, the testing lines she bowled to the batters was just phenomenal. The way she got Beth Mooney out early on through the gates, the in-swinging delivery. We've also discussed about her, struggling against the paces. So that delivery was on spot. And also the wicket keeper coming up to the stumps over there was like a clear message because all of us know that she loves to use her feet. And RCB had done their homework on that aspect, and they got off to a brilliant start there, after which Sophie Molyneux came later on and scalped wickets as well. If you guys come to notice, two of the wickets which she took came off the quicker deliveries which were fired in when the batters were not anticipating about it. So again, spectacularly well done. She caught the batters off guard. And I think once the opponents were restricted to such a low score, it was bread on butter for the RCB batters. The way Smriti Mandana got off yesterday was so pleasing to the eye. The cover drives, the cut shots, or even the flick shots at the power play was just phenomenal for me. Quite disappointing that Sophie Devine once again got out cheaply to an off spinner. It's something we've been discussing about, and it was not like it was a great ball as well. It was a little short on the leg stump, which she gave it to short square leg. But nevertheless, Meghna and Elise Perry made up for it. Both played some fearless cricket to ride RCB to a victory. So very pleasing for the girls in red and gold. And I'm hopeful they have a good season ahead. And we may never know that they might be the first one to get Bangalore their elusive trophy. बिल्कुल बिल्कुल हमने कल के ही शो में डिस्कस किया था कि the opposition captains are packing up the offside and then Smriti Mandana has to play something that she's not naturally comfortable with. But in yesterday's match हमने देखा कि she was stepping across the off stump and then she was playing the ball towards the leg side. So that was very refreshing to watch from an Indian standpoint. तो अब आज की मैच की ओर बढ़ते हैं. आज का मैच होगा मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के बीच. मुंबई इंडियंस अपने पिछले दोनों मैच जीते हैं. पहला मैच काफी क्लोज रहा था बट फिर दूसरे मैच में वो काफी कन्विंसिंगली जीते and they will be very high on confidence when they take on UP today because UP have lost both their matches. So दूसरी ओर यूपी दोनों मैच में हार का सामना करना पड़ा है उन्होंने और पहला मैच क्लोज था जो आरसीबी के अगेंस्ट था बट दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट जो सेकंड मैच था उसमें एक भारी मार्जिन से हार का सामना किया है उन्होंने और ये मैच काफी क्रूशियल रहेगा उनके लिए कि टूर्नामेंट में अपना खाता खोले और गेट दैट फर्स्ट विन अंडर द बेल्ट like we've been discussing all throughout because it's a good feel good factor as a team. So Julie, what do you have to say about today's match? How important is it from a UP standpoint and how important is it for Mumbai to continue the winning momentum? I think more than MI versus UP, I'm looking at more like Harmanpreet versus Healy because we all know कि इनका ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड जो भी आई थिंक जो बैंटर्स या जो भी रहते हैं वो देखने में काफी मजा आता है.
आई एम एक्सपेक्टिंग कि फैंस को भी आज आई थिंक पैसा वसूल मैच हो सकता है, जो भी चिन्नास्वामी स्टेडियम में जाएगा। हीली, हरमनप्रीत और वैसे कुछ, आई एम होपिंग कि हरमनप्रीत वैसे कुछ रनआउट ना हो जाए, जो बिजार रनआउट्स हुए थे उनके, जो हमें T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल याद होगा, या टेस्ट मैच के अंदर भी जो एक इंग्लैंड के खिलाफ जो रनआउट हुआ था, वो आई थिंक वो देखने में भी काफी मजा आएगा, हीली वर्सेस हरमनप्रीत। बट यस, ऑन अ डिफरेंट साइड, टॉकिंग अबाउट WPL 2024, आई फील एक इम्पोर्टेंट मैच है यूपी वॉरियर्स के लिए। 2 लॉसेस के बाद इस मैच के अंदर उतरेंगे, और वो भी उनको सामना करना है किसका? डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस का। तो ये बिल्कुल भी इजी टेस्ट नहीं होने वाला है एलिसा हीली और उसके टीम के लिए। और जो भी हम उनके जो प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते आए हैं, और जो ओपनिंग पेयर हो या जो उनका रिलेटिवली वीकर बॉलिंग अटैक, मैं कहूंगी अगर हम ये पांचों टीमें देखें, मेरे ख्याल से यूपी वॉरियर्स आई थिंक दे हैव अ वेरी आई थिंक रिलेटिवली वीकर बॉलिंग अटैक। और पिछले मैच में भी जो उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जो स्ट्रेटेजी यूज करी थी, केवल एक स्पीडस्टर के साथ गए थे, और वो भी कौन था? तालिया मैग्राथ, जो कि आई वुड रेट हर एज अ बैटिंग ऑलराउंडर। तो आई थिंक उनके जो स्ट्रेटेजीज है विद रिस्पेक्ट टू देयर प्लेइंग 11, आई थिंक दे हैव टू गेट इट राइट दिस टाइम, क्योंकि मुंबई इंडियंस बिल्कुल भी आसान टीम नहीं है बीट करने के लिए। तो आज अगर वो जो प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन है, अगर वो अच्छा सेट करे और फिर फील्ड पे उतरे, तो एक अच्छा प्रदर्शन हमें देखने मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक एलिसा हीली का रोल आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आई थिंक शी हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि बाकी जो बल्लेबाज है, श्वेता सहरावत के ऊपर आप कितना डिपेंड रहोगे? आई थिंक शी इज जस्ट 20 years of age, and she has been the highest run scorer for UP Warriors, so you cannot be so much dependent on a youngster. तो आई थिंक एलिसा हीली को अभी स्टेप अप करना होगा, ज्यादा रन स्कोर करने होंगे, एंड ऑफ कोर्स एक अच्छा ओपनिंग पार्टनर आई थिंक ढूंढना होगा। देखते हैं कि आज चमारी अटापाटू या डैनी वाइट को मौका देती है यूपी वॉरियर्स की टीम, क्योंकि वृंदा दिनेश हमने देखा है दोनों मैचेस में ज्यादा स्कोर नहीं कर पाई है। तो क्या एक ओपनिंग कॉम्बिनेशन में हम बदलाव देखेंगे? बट आई थिंक ओवरऑल एक अच्छा मैच हो सकता है इफ यूपी वॉरियर्स दे प्ले टू देयर पोटेंशियल। बट ऑन दी अदर हैंड आई फील मुंबई इंडियंस आई थिंक अभी तक वो ज्यादा टेस्ट नहीं हुए। अगर हमने ये दोनों मैचेस भी देखे, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ऑफकोर्स एक क्लोज मैच था, बट जीजी के खिलाफ एक टोटली वन साइडेड मैच था। तो अभी तक मुंबई इंडियंस को किसी ने टेस्ट नहीं करा है। तो अगर आज यूपी वॉरियर्स मुंबई इंडियंस को टेस्ट करती है, बैटिंग में हो या बॉलिंग में हो, तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट जरूर हो सकता है। बट अदरवाइज आई फील मुंबई इंडियंस आई थिंक दे कुड विन दिस मैच अगेन एंड मेक इट 3-3 नाउ। Yeah, Bilkul, as you rightly said, the Mumbai Indians haven't been tested as such in the tournament. And the other fact being that in both the matches, they have chased down targets. They haven't had a taste of batting first. So that will be interesting to watch if the UP Warriors do win the toss and put Mumbai Indians to bat first. That would be something that would be a real test, because we've seen that the teams batting first, apart from Delhi Capitals in the first match, haven't registered a par total per se. Even RCB registered a 150 odd score, but that got them crawling over the line. So that would be definitely interesting to watch. Pratik, what do you have to say about today's match? Well, from UP standpoint, it's an extremely essential game, and I feel from here on it's make or break for them because they're already done with 2 games, and what happens today would build the momentum for them upwards or downwards, and they've gotten a lot of aspects to sort out as well. The very first one being that they're batting at the top because runs haven't been coming, because of which the middle order also has been affected, and overall their run scoring ability has gone down. So it is essential to look out for star players such as Elisa Healy, Talia McGrath, and Grace Harris to step forward today. As Julie mentioned, Shweta Sehrawat has shown her mettle as a middle order batsman and has also held that middle order from collapsing. She has taken them to a respectable total, but we need to see firepower from the top because that is what a top order is supposed to do, to get you off to flamboyant starts and make sure that the batters to come have the leverage to play it out. So it is important for UP to get going. They also have the firepower in their bowling. Sophie Eccleston in their ranks as a star spinner. She could turn the game on its head itself by scalping a couple of quick wickets. So I'm hopeful that they have a change in strategy today, be it batting or bowling or even being agile on the field while fielding. And when it comes to Mumbai Indians, I think they've been quite comprehensive, and I wouldn't like anything for them to change because things are going good. Although a few aspects such as Haley Matthews to gain form because she's one big gun we've been waiting for to fire both with the bat and ball as well. And
yes, that's pretty much it. I'm just hopeful that UP come up with an answer today against Mumbai Indians, who are in red hot form and also are the defending champions. So, apart from just Alicia Healy taking the onus to score runs, I think it is about time Grace Harris and Dahlia McGrath also, put their hand up and contribute with the middle order. Like Julie mentioned, how much expectations do you have out of a 20-year-old Shweta Sehrawat? Like, yeah, she's contributing. That is definitely a positive, but the entire run scoring onus cannot be on her. So let's take a look at today's key players. Let's start off with Mumbai Indians. So हरमनप्रीत कौर बतौर कैप्टन और बैटर काफी क्रूशियल रोल प्ले करती है मुंबई के लिए और टूर्नामेंट और मुंबई की टॉप स्कोरर है फिलहाल वो एंड शी होल्ड्स द ऑरेंज कैप टू. उन्होंने 2 मैच में 101 रन बनाए हैं और एक ही बार आउट हुई है जिसके चलते टूर्नामेंट में उनका 101 रन का एवरेज है. जूली आपके व्यूज क्या है हरमनप्रीत के आज का उनका इम्पैक्ट क्या होगा ये गेम पर आज के? ये आंकड़े देखकर और वो ऑरेंज कैप होल्डर है ये सुनकर ही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि हमें सब पता है कि एज इंडियन फैंस वी वांटिंग हरमनप्रीत कौर टू स्कोर बिग. पिछले कुछ सीरीज में हमने देखा है कि ज़्यादा उनका बल्ला बोला नहीं, पर WPL 2024 के अंदर हमने देखा 2 मैचेस और 2 फ्लुएंट इनिंग्स, मैं कहूँगी अच्छी पारियां उन्होंने खेली है. जब भी बॉल के मेरिट के ऊपर उनको बल्लेबाजी करनी थी वैसे उन्होंने बॉलर्स को रिस्पेक्ट करके डिफेंसिव खेले हैं. जब एग्रेसिव होना था उन्होंने एग्रेसिव हैट अपनी पहनी. तो आई थिंक एक अच्छी बल्लेबाजी हम देख रहे हैं हरमनप्रीत से. और जैसे कि मैंने पहले भी इस डिस्कशन में कहा था, आई थिंक हरमनप्रीत कौर 2.0 हमें शायद देखने मिलेगी. और जो भी चेंजेस उनके अंदर हुए, जैसे कि उन्होंने पहले मैच के बाद भी किसी हिमांशु भैया का मेंशन करा था, आई थिंक हुएवर दैट हिमांशु इज, आई थिंक ही इज डन अ वंडरफुल जॉब. उनका माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो गया है. तो अच्छी बल्लेबाजी हमने देखी है हरमनप्रीत से. नंबर 4 एक इम्पोर्टेंट पोजीशन है, वहाँ पे वो बल्लेबाजी करती है. और आई थिंक जो मिडिल ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी तरीके से उन्होंने अपने कंधों पर ली है और अच्छा प्रदर्शन करा है. और उनके आंकड़े हम जो देख रहे हैं 101 रन, पर मैंने उनका थोड़ा ब्रेकअप करा है. अगर हम उनके चौके और छक्के देखें तो 12 चौके और 2 छक्के हैं, तो मतलब 60 रन बाउंड्रीज में आए हैं. तो ये एक अच्छा स्टैट है किसी भी बल्लेबाज के लिए कि 60% ऑफ द रन्स आर कमिंग इन बाउंड्रीज, पर बाकी जो 40% रन्स है तो वो शी इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन रनिंग बिटवीन द विकेट्स ऑल्सो. तो यही दिखाता है कि एक अच्छे तरीके से उन्होंने इनिंग्स को अपने कंस्ट्रक्ट करा है और आज भी आई थिंक वैसा ही कुछ रोल हो सकता है. और मैं दोबारा कहूंगी हीली के खिलाफ जब भी वो आएंगी आई थिंक एक अलग माइंडसेट से उतरेंगी और बड़ी पारी खेलने की उनकी कोशिश होगी. और WPL 2023 में जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने आई थी, पहले मैच में मेरे ख्याल से उन्होंने एक हाफ सेंचुरी भी लगाई थी हरमनप्रीत ने और प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी जीता था. तो आई थिंक यूपी वॉरियर्स के खिलाफ उनको खेलना पसंद भी है और हीली के खिलाफ भी खेलना उनको पसंद है. तो एक बड़ी पारी दोबारा मैं होपफुल हूँ हरमनप्रीत के ओर से आएगी आज. हाँ, जैसा कि हम पिछले 2 मैच के पहले डिस्कस कर रहे थे कि हरमनप्रीत स्पिनर्स के अगेंस्ट इतनी कंफर्टेबल नहीं लग रही है. सो सडनली all those problems against the spinners have also disappeared, and I don't want to jinx anything as a Mumbai and Indian fan. I don't want anything to change. I love how she's playing the spinners. Pratik, what do you have to say about Harmanpreet Kaur? Well, up until now in this WPL, Harmanpreet has played extremely mature innings. She's come at a very testing time in both the games where her team was struggling. So she's played as a captain and not only as a batter who comes at the top of the order. So I would give it her to her for that, and I'm hopeful that she does continue with such innings because there's plenty of firepower in that batting lineup, and the way she's going about negating the spinners effect as well is quite impressive. The last time around we saw how strong she was on her sweep shots, both the conventional as well as the reverse sweep. So those are big positives for Harmanpreet Kaur, and I'm also excited for her matchup against the opposition's captain because Harmanpreet has always been that outgoing person who treats aggression with aggression itself and backs her player wherever it is required. So it is going to be one high intensity contest today. Definitely. So now let's take a look at the second key player from Mumbai Indians, that is Amelia Kerr. न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर है, क्रूशियल रोल अदा करती है मुंबई इंडियंस की टीम में.
टॉप विकेट टेकर है फिलहाल मुंबई की और पर्पल कैप होल्डर भी है। सो बैट और बॉल दोनों के साथ उनका की कॉन्ट्रीब्यूशंस है और इस सीजन में उन्होंने 55 रन्स बनाए विद द बैट और 6 विकेट भी निकाले हैं। So from a Mumbai point of view, when you have both the orange cap and the purple cap holder in your team, you are assuming everything in the team is definitely going right. And you know, it justifies them having won 2 matches out of the 2 matches. So Julie, आपका क्या कहना है अमिलिया खर के बारे में? What impact she's had on the tournament so far and what will be her role going forward? नहीं, अच्छा प्रदर्शन रहा है अमिलिया कर का। लेग स्पिनर है, 6 विकेट्स चटका चुके ऑलरेडी 2 मैचेस के अंदर और पिछले मैच में गुजरात जायंट्स के खिलाफ हमने देखा कि 4 विकेट्स उन्होंने लिए थे। और उनकी खास बात मुझे यही लगती है कि मिडल ओवर्स हो या डेथ ओवर्स हो, वो किसी भी फेज में अच्छी गेंदबाजी करती आई है और खासकर उनके जो गुगलीज होते हैं, मेरे ख्याल से अभी भी काफी बल्लेबाज है वो पढ़ नहीं पाते उनके हाथ से क्या वो लेग स्पिन आ रहा है, जो कन्वेंशनल लेग स्पिन होता है वो आ रहा है या गुगली आ रहा है। तो आई थिंक द वे शी डिसीव्स द बैटर्स, चाहे वो राइट हैंडेड हो या लेफ्ट हैंडेड हो, वो अच्छा आई थिंक उनके वही फॉर्म में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है और वो आंकड़े भी वही झलका रहा है कि 6 विकेट्स उनको मिले हैं अभी तक। और मेरे ख्याल से जो स्पॉट बॉलिंग जिसकी हम काफी बॉलर्स से भी चर्चा में सुनते हैं कि वो वैसे जो प्रैक्टिस करता है, आई थिंक अमिलिया कर ने वैसे भी काफी प्रैक्टिस करी होगी क्योंकि एक ही टप्पा पे कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली गेंदबाजी करना मुश्किल होता है, खासकर एक लेग स्पिनर के लिए। तो काफी अच्छा कंट्रोल भी उन्होंने दिखाया उनके गेंदबाजी के अंदर और काफी सक्सेसफुल भी रही है। तो अमिलिया कर आई थिंक आज वापस एक अच्छा मौका है उनके पास, अच्छी बॉलिंग कर सकती है और ऑफकोर्स बैटिंग के साथ जैसे कि आपने कहा 55 रन बना चुके हैं और पिछले मैच में ही 31 रन आए थे और अच्छी साझेदारी वहां पे उनकी हुई थी कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ। क्योंकि यजाद प्रतीक हमें याद होगा गुजरात जायंट्स के खिलाफ जब अमिलिया कर बैटिंग करने आई थी तब 49 पे 3 विकेट्स खोए थे मुंबई इंडियंस ने और एक 127, मेरे ख्याल से वो एक T20 क्रिकेट के अंदर एक ट्रिकी टोटल होता है कि आइदर इट इज नॉट लाइक हिट आउट और गेट आउट या एकदम डिफेंसिव भी नहीं खेल सकते। तो वैसे ट्रिकी सिचुएशन के अंदर अमिलिया कर आई, उन्होंने 66 रनों की साझेदारी करी कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ और आई थिंक वो मैच विनिंग पार्टनरशिप भी रही थी। तो आई थिंक एज अ बैटर एंड एज अ बॉलर शी हैज बीन एबल टू कंट्रीब्यूट वेल फॉर मुंबई इंडियंस और अच्छे साइंस है ये मुंबई के लिए। बिल्कुल। और जैसा हम बात कर रहे थे कि उन्हें हाथ में से पिक करना इजी नहीं है उनकी डिलीवरी और वेरिएशन को, और अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक शी इज आल्सो अ बिट क्विकर एज कंपेयर्ड टू द अदर लेग स्पिनर्स, जिससे यू कैन नॉट इवन वेट एंड रीड हर ऑफ द सरफेस। तो प्रतीक, व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड टू दिस अमिलिया कर कॉन्वर्सेशन? Yes, Yazad. So, as mentioned by you and Julie, you know that she's not like the conventional leggies, you know, who give you the time to step out or you can read out of them. I think she comes close to resembling Rashid Khan, where it just skids off the turf and you don't know which way it's turning, whether it's coming in or going out. And it puts a big question mark on the batter's mind as to what is going to happen. And I think this has played positively into her favor because we've seen in that previous outing, 4 batters step out to hit her over the fence, and all 4 were stumped. It was either because there was too much turn or the ball was turning in the other direction, but she was successful in deceiving the batters with her turn. So that is a very very big positive. And for such a youngster like her to come in and bat at such a tense situation with Harmanpreet Kaur in the previous game was very fun to watch. Mind you, you know, another wicket in that stage would have dictated as to where the game would have gone, but she held her nerve and rotated the strike, after which she got the occasional boundaries as well. So I really think that she's growing by the game and she does have the potential to make a much bigger impact in this tournament. So she's one person to watch out for today. Definitely. Now let's take a look at the UP Warriors key players for today. Also, Sophie Eccleston, we all know she's a key player in whichever team she plays, be it a franchise T20 team और द इंग्लिश साइड। सो बतौर स्पिनर है इंग्लैंड की, उम्दा गेंदबाज है और एक रिलायबल फोर्स रहती है, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे अपने कप्तान के लिए। भले इस सीजन में उनका फॉर्म थोड़ा अच्छा नहीं रहा हो या इतना अच्छा फॉर्म नहीं दर्शाया हो, बट इन द लास्ट मैच वी सॉ कि उनकी बॉलिंग पर एक कैच ड्रॉप हुआ था और एक एलिसिया हिली ने बहुत कंपैरेटिवली इजी स्टंपिंग का चांस मिस किया था। So, Julie, what would you like to tell us about Sophie Eccleston? अभी तक 2 ही विकेट्स चटका पाई है एकिल्स्टन, हालांकि वो वर्ल्ड नंबर 1 T20 बॉलर भी है जिसकी हमने चर्चा भी करी है
पर 2 मैचेस में 2 विकेट्स, तो ये आंकड़े यूजुअली हम एसोसिएट नहीं करेंगे सोफी एकल्स्टन जैसे काबिल गेंदबाज से। पर डब्ल्यूपीएल 2023 के आंकड़े में जस्ट देख रही थी कि क्या एकल्स्टन की शुरुआत ऐसी ही थी कंपेयर टू दिस सीजन, तो वैसे ही कुछ था। यजाद और प्रतीक पिछले दो जो डब्ल्यूपीएल 2023 में पहले 2 मैचेस खेले थे एकल्स्टन ने, उसमें भी 3 विकेट्स ही निकाले थे, तो ज्यादा दूर नहीं है। इस सीजन अभी तक 2 विकेट्स चटकाए हैं, पिछले सीजन में 3 विकेट्स थे 2 मैचेस के अंदर। पर जो तीसरा मैच उनका था, फॉर ऑल द सोफी एकल्स्टन फैंस, जो तीसरा मैच उनका था जो आरसीबी के खिलाफ उन्होंने खेला था डब्ल्यूपीएल 2023 में, तभी उन्होंने 4 विकेट्स चटकाए थे। और आई थिंक उसके बाद उनका जो ग्राफ था वो ऊपर चला गया था। तो आई थिंक आज भी वो तीसरा मैच खेलेंगी, हालांकि मुंबई इंडियंस उनके सामने होंगे। तो अगर वहां पे अगर आज 2, 3 या 4 भी विकेट्स वो चटका पाती है और अच्छे विकेट्स या जल्दी विकेट्स उनको मिलते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके कॉन्फिडेंस को काफी बूस्ट मिलेगा और आने वाले मैचेस में भी वो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। बट आई थिंक वन ऑफ द रीजंस फॉर हर लैक इन फॉर्म इज कि वो जिसकी इंजरी के बारे में हम बात कर ही रहे थे, पर हालांकि वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है और जो इंजरी हुई थी वो उनके राइट शोल्डर को हुई थी। बट किसी भी लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए राइट आर्म जो होता है वो डायरेक्शन देता है गेंद को, तो आई थिंक वो डायरेक्शन में आई थिंक थोड़े से इश्यूज उनको हो रहे होंगे, या प्रोबेबली शी इज नॉट एट 100% फिट। तो वो भी एक वजह हो सकती है कि वो एक रिदम में नहीं आ पा रही है, और एक स्पिनर के लिए रिदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर एकल्स्टन if she's able to find out that rhythm, तो I think अच्छी गेंदबाजी हम उनसे देख पाएंगे। बिल्कुल, and apart from that, there is not much firepower in the UP Warriors bowling attack, or none of the bowlers so far are firing. So जो हम जैसे बैटिंग में पार्टनरशिप्स डिस्कस करते हैं, बॉलिंग में भी वैसे ही प्रकार की पार्टनरशिप्स होती है। एक एंड से प्रेशर बने, भले विकेट नहीं मिले, द रिवॉर्ड्स फॉर विच आर रीप्ड फ्रॉम द अदर एंड, जहाँ पे आपको विकेट्स मिल रहे हैं। सो अब सोफी एकल्स्टन पर से is bowling well, but she does not have a companion along with whom she can bowl in tandem. Pratik, what would you like to tell us about Sophie Eccleston? Well, as all of we discussed, good things do take time. So I'm hopeful that Sophie is back to her best and out there scalping wickets. Given that the Mumbai batters are riding high on confidence, so I'm sure that they would have a go at Sophie today and try to deposit her into the stands, which would aid her in getting wickets. Because up until now, she hasn't been really that expensive. It's only the previous game at the back end she was expensive because it was a lower total, but in the first game, she maintained a steady economy of 6. So if the batters do go and attack to her, she's one bowler who would definitely get the wickets because she's got the varying paces and length, and she mixes them up extremely well. So I'm hopeful that she makes use of the various factors, that is bowling from the end where it is the farther end for the batters to pull it on to the leg side, or coming on with a round arm action and things like this. It's only about trying some variations before she gets into the wickets tally. Definitely. And apart from that, the fact is that irrespective of how many times you've toured a place, you sometimes take your own time to get settled into the conditions. You can't just go to the match and expect yourself to perform. Or sometimes it does take a few matches to, get into that sort of rhythm where you become dangerous to play. So let's take a look at the next key player for UP Warriors today. जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे श्वेता सहरावत के बारे में, यंग इंडियन बैटर है और काफी हद तक अकेले यूपी वॉरियर्स की मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी उठाई है उन्होंने। 2 मैच में उन्होंने 76 रन बनाए हैं और 38 की एवरेज है उनकी। और जैसे हम डिस्कस कर रहे थे पहले भी कि पिछले सीजन जैसे एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर शी वाज लुकिंग आउट ऑफ प्लेस, तो वैसा नहीं लग रहा है इस सीजन। काफी कॉन्फिडेंटली खेल रही है और दूसरे इंटरनेशनल प्लेयर्स पे से भी प्रेशर अब्सॉर्ब कर रही है। तो प्रतीक, आपका क्या कहना है श्वेता के बारे में? Well, as opposed to the previous season, we've all seen that Shweta has gotten that extra second to get into the position and play her shots extremely fluently. We saw her putting Elise Perry into pressure, one of the topmost bowlers going around in the women's circuit. So she's extremely high on her confidence, and this is not something that has just come to her naturally. She's worked for it throughout the years, and her captaining the Indian team in the under 19 World Cup has also gotten her that much more maturity, which has aided her to play with certain responsibilities in this batting lineup as well.
because both times when she's come on to bat, it has been where the team has been reeling with a lesser score and more wickets lost. So I'm hopeful that such a situation does not come for them today. But even if it does, it is always a green card for her to go behind the bowlers and play the aggressive game she does. So I'm backing her for do that today as well. बिल्कुल बिल्कुल Julie, what would you like to tell us about Shweta Sehrawat's role today? आई थिंक उनकी जो उम्र है 20 साल, उससे ज़्यादा मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई है मुझे लगता है फील्ड के ऊपर। हाल ही में उन्होंने अपना 20th बर्थडे भी सेलिब्रेट करा था जब वो पिछला मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हुआ था, और 45 रन तो खुद को ही उन्होंने एक अच्छा बर्थडे गिफ्ट जरूर दिया, पर आई थिंक उनको पसंद आता कि अगर यूपी वॉरियर्स की टीम वो मैच जीत जाती, पर वैसे कुछ हुआ नहीं। हालांकि उनका रिकॉर्ड अभी तक अच्छा रहा है, 4th हाईएस्ट रन स्कोरर रही अभी तक टूर्नामेंट में, और अपने टीम के लिए ऑफकोर्स द लीडिंग रन स्कोरर है। 76 रन है, पर ये ज्यादा, और प्रतीक मुझे यहाँ पे यही दिखाना है आपको कि जो स्ट्राइक रेट है श्वेता का 113 का ही स्ट्राइक रेट है। तो हालांकि रन्स उनके बल्ले से आए हैं एंड प्रोबेबली शी इज द ओनली बैटर टू स्कोर दीज मेनी रन्स फॉर हर टीम, बट अगर स्ट्राइक रेट के ऊपर अगर वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करे, 113 का अगर 120 या 25 तक भी लेकर जाए तो ऑटोमेटिकली अपने टीम टोटल में भी 20-25 रन ऐड हो जाते हैं, और वो अच्छा होता है जब भी उनके गेंदबाजी करने के लिए और स्कोर डिफेंड करने के लिए आते हैं। तो प्रोबेबली विद द बैट शी इज डूइंग हर जॉब वेल, पर अगर थोड़ा सा उनका रन स्कोरिंग का पेस जो है वो अगर बढ़ा पाए तो वो अच्छा हो सकता है। बट ऑब्वियसली वी आर आस्किंग टू मच आउट ऑफ अ यंगस्टर राइट नाउ, वेरी अर्ली इन द सीजन, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में अगर हम देखें तो पहला मैच जो हुआ था आरसीबी के खिलाफ, तभी आई थिंक वो 8th या 9th ओवर में ही आए थे बैटिंग करने के लिए, और जो दूसरा मैच डीसी के खिलाफ हुआ था तभी मेरे ख्याल से केवल 5th ओवर में ही आए थे बैटिंग करने के लिए। तो यूजुअली एक नंबर 5 जो बैटर होता है 13, 14 या 15th ओवर में उनकी बल्लेबाजी आना एक्सपेक्टेड होता है, पर श्वेता को काफी जल्दी आना पड़ रहा है इनिंग्स के अंदर, तो इसीलिए उनको थोड़ा वो इनिंग्स को कंसोलिडेट करना हो रहा है और उसके बाद बड़े हिट्स लगाने हैं। तो अगर somehow she is able to strike that balance, आई थिंक अभी तक ये 2 मैचेस वो कर पा रही है, पर वैसे ही अगर आगे भी करे और थोड़े तेज गति से रन बनाए तो अच्छा हो सकता है यूपी के लिए। बिल्कुल सो अब एक फैन पर्सपेक्टिव से देखते हैं आज के मैच को। सो पहले मुंबई इंडियंस के फैंस की ओर से देखते हैं नैट सिवर ब्रंट का जो बैटिंग फॉर्म है वो उसको डिस्कस करेंगे। तो पिछले सीजन में क्रूशियल और की प्लेयर थी मुंबई इंडियंस की, और इस बार भी है। वी आर नॉट रूलिंग हर आउट और एनीथिंग, बट शी हैजंट सीम्ड हर यूजुअल सेल्फ, वन वुड से, विद द बैट। We've seen her getting starts and then being dismissed. और पिछले मैच में थोड़े अनलकी रहे थे जहां वो रन आउट हुए थे, बट in the first match she got out playing a rash shot, like she tried to flick the ball from between her legs, so which she usually does pull off. That's why we are saying that she hasn't seemed her usual self. So Julie, आपका नैट सिवर ब्रंट के फॉर्म के बारे में क्या कहना है? मुझे नहीं ज़्यादा इतनी चिंता नहीं है एनएसबी के फॉर्म के ऊपर से, और सिमिलर टू एलिस पेरी, जैसे हम कल भी डिस्कशन में बात कर रहे थे कि पेरी के बल्ले से ज़्यादा रन्स नहीं आए, विकेट्स भी नहीं चटकाए। तो आई थिंक दीज प्लेयर्स आर जस्ट 1 मैच अवे या 1 परफॉर्मेंस अवे फ्रॉम रीगेनिंग देयर लॉस्ट फॉर्म या लॉस्ट टच। और ये जैसे कि आपने हाईलाइट करा था कि पिछले मैच में थोड़े से अनलकी रहे थे, हरमनप्रीत कौर ने उनको जो कॉल दिया था सिंगल के लिए, शायद नैट सिवर ब्रंट रेडी नहीं थे उस सिंगल के लिए, क्योंकि स्टार्ट उनको अच्छी मिली थी। 22 रन की इनिंग्स उन्होंने ऑलरेडी स्कोर करी थी और अच्छे रेट से भी वो स्कोर कर रहे थे। तो जीजी के खिलाफ एक बड़ी पारी आ सकती थी उनके बल्ले से, पर वैसे हुआ नहीं क्योंकि रन आउट हो गए। बट आई डोंट थिंक ज्यादा कंसर्न होगा मुंबई इंडियंस को भी या नैट सिवर ब्रंट खुद को भी अपने फॉर्म के ऊपर। एक क्वालिटी प्लेयर है, और आज एक यूपी वॉरियर्स के सामने जो आई थिंक रिलेटिवली वीकर बॉलिंग अटैक, जिसके बारे में मैं कह रही हूँ, हालांकि एक्ल्स्टन है उनके लाइनअप में, बट आई थिंक एक रिलेटिवली वीकर बॉलिंग अटैक के सामने आज उनके पास एक मौका है बड़ी इनिंग्स खेलने का। बिल्कुल। प्रतीक, आपका क्या कहना है नैट सिवर के फॉर्म के बारे में? Well, again, nothing to worry about in particular, because the last game it was very unfortunate that she got out in that fashion. But other than that, she was batting on 22 of 18 and playing quite the innings that we wanted to see. So there's nothing to worry as such. I'm just hopeful that we do not see more such unfortunate circumstances that would take place. And on the bowling front, she did get a wicket the previous game, but again, as I mentioned, her go-to thing isn't the pace, but to maintain a good line and length and make it difficult for batters to find room of it, or get the leverage to rock onto the back foot and send her over the stands.
So keep it tight and vary it with slower ones. Up until now, we've seen many bowlers in this tournament make use of the pitch and bowl the slower ones whenever it is required, because the more faster you come, the faster you go. So just be mindful and put up a good line and length there. Bilkul. So now let's take a look at the next talking point from the Gujarat fans' perspective. So that is Tahilya Meghra's form. So बतौर ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर है, बट इस सीजन उनका फॉर्म थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म लग रही है वो। बैटिंग में उन्होंने 2 इनिंग्स में केवल 23 रन बनाए हैं और बॉलिंग में उन्होंने 7 ओवर में 1 विकेट लिया है। जूली, आप तहिल्या मेगरा के फॉर्म पर क्या कमेंट करना चाहेंगी? आई थिंक थोड़ा बुरे फॉर्म से गुजर रही है तालिया मगरात। अगर हम उनके इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स भी देखें तो मैं सिर्फ रिसेंट 2 T20 सीरीज जो उन्होंने खेले थे साउथ अफ्रीका और इंडिया, उसका ही मुझे कंपैरिजन करना है। रिसेंट रिकॉर्ड्स जो थे, तो अगर वो 6 T20 अगर हम देखें तो वो 6 में से केवल 3 मैचेस में उन्होंने गेंदबाजी करी थी और वो तीनों मैचेस में केवल 2-2 ओवर्स ही उन्होंने करे थे। तो शी इज नॉट लाइक अ फुल टाइम बॉलर जो ऑस्ट्रेलिया यूज करती है उनको। बट यूपी वॉरियर्स के खेमे में अगर हम देखें तो पिछले मैच में शी वॉज द ओनली फास्ट बॉलर, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो अपना पूरा स्पेल करे। तो आई थिंक अभी तक जो रोल क्लैरिटी है वो आई थिंक यूपी वॉरियर्स हैज नॉट बीन एबल टू गिव इट टू ईच ऑफ इट्स प्लेयर्स। तो अगर वो पॉसिबल हो तो ऑटोमेटिकली आई थिंक तालिया मगरात के फॉर्म में हम इम्प्रूवमेंट्स देखेंगे। उनके बल्ले से रन्स आएंगे, उनकी गेंद जब वो गेंदबाजी करेंगे तो विकेट्स भी आएंगे। तो आई थिंक रोल क्लैरिटी विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरे साइड अगर हम बैटिंग की भी बात करें तो दोबारा जो पिछला जो सीरीज उनका हुआ था साउथ अफ्रीका और इंडिया के खिलाफ, जो 6 T20 मैचेस हुए थे, तो एक भी बार वो 30 के ऊपर रन नहीं बना पाए थे। तो आई थिंक शी इज स्ट्रगलिंग फॉर अ बिट ऑफ फॉर्म। आई थिंक इंटरनेशनली भी अगर हम देखें तो आई थिंक वही WPL 2024 में भी कैरी हुआ है। हालांकि पहला मैच अच्छा था, उन्होंने 22 रन बनाए थे, पर पिछला मैच अगर हम देखें दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जो मैच हुआ था मारिजान काप, आई थिंक एब्सोल्युटली शी वाज एट हर लीथल बेस्ट। तो उनके सामने उनको खेलना काफी मुश्किल हो रहा था। 8 गेंदें उन्होंने ली और हमने देखा कि शी वाज स्ट्रगलिंग टू इवन मीट द बॉल विद द बैट। तो आई थिंक आज एक फ्रेश स्टार्ट अगर वो सोचे, पिछले दोनों मैचेस भूले और एक अच्छी शुरुआत या फ्रेश माइंडसेट से उतरे तो रन आ सकते हैं उनके बल्ले से। बिल्कुल। प्रतीक, what would you like to comment on Tahilya's form? Well, first, starting off with her batting, the way she was rattled by Madison Cap in the previous game, it was quite evident that, she was quite, not there in the moment when she played the shot, because that is not something we've seen from her over the past, because her mindset is clear. Either she rocks on to the front foot and plays the cover drive or lets the ball leave alone. But the previous time around, her approach was quiet way, and just throwing away the bat to that. And like mentioned by Julie, somewhere she's going through a lean patch, and I'm hopeful that the team gives her some time and more opportunities in this tournament to come to her level best, because we know the kind of potential she possesses, and if she gets going, that's a huge positive for them. And I'm just hopeful that she gets runs today. I myself, a person who loves looking at her batting, talking from the fans' perspective, just hang in there and wait for the loose balls. Runs are going to come, and the best place to be is the non-strikers end. So get started off with that, and then with the boundaries. And again, when it comes to her bowling, there has been a lack of role definition, because that is not something she does on a regular basis, and she's also not got a great control over the new ball, which is aiding for her to leak away runs in the beginning. Yeah. So now let's take a look at our matchups for today. So our matchups for today are first from the Mumbai Indians perspective, Nat Sever against the spinners. So we may not have noticed this as much, but definitely Nat Sever spinners के सामने रन बनाने में struggle करती है, and we've also seen her getting dismissed while trying to attack them. बतौर इंग्लिश ऑलराउंडर रही है और उनका एवरेज overall in the women's T20s is 31.38, but while playing spin, it drops to 19.39. So, Julie, what would you like to tell us about this matchup? तो आज उनके सामने अच्छे स्पिनर्स होंगे ज़रूर। अगर यूपी वॉरियर्स की हम बात करें तो एनएसबी के सामने सोफी एक्सटन, जो खुद उनकी इंग्लिश टीममेट भी रही है, तो काफ़ी नेट्स के अंदर उन्होंने एक दूसरे के सामने खेला होगा। तो ये एक अच्छा मैचअप, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और उसके बाद दीप्ति शर्मा है या गोहर सुल्ताना को और एक चांस मिलेगा, तो आज
उनको भी हम देखेंगे, ग्रेस हैरिस जैसे स्पिनर भी है, तो आई थिंक गायकवाड, राजेश्वरी गायकवाड, ये और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है यूपी वॉरियर्स के पास, तो अच्छा स्पिन अटैक जरूर है एनएसबी के सामने, बट आई डोंट थिंक, जैसे हमने उनके फॉर्म के बारे में पहले भी बात करी थी, 2 मैचेस में ज्यादा रन आए नहीं है, 41 रन ही बना पाई है, तो मुझे नहीं लगता स्पिनर्स के खिलाफ ज्यादा इश्यूज होंगे उनको। आई थिंक शी विल हैव टू प्ले हर नेचुरल गेम, और जब भी कोई खराब डिलीवरी आए स्पिनर्स से, तो आई थिंक शी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट, कैपिटलाइज ऑन इट, और जो भी अच्छे बॉल्स है वो मेरिट के ऊपर खेले, सिंगल्स डबल्स एंड कीप द स्कोर बोर्ड टिकिंग। तो आई थिंक ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है एनएसबी को, टेक इट एज इट कम्स, एंड वी ऑल नो दैट शी इज अ क्वालिटी प्लेयर, तो अच्छा ही प्रदर्शन होगा आज उनका स्पिनर के खिलाफ। बिल्कुल, जैसा आपने पहले भी डिस्कस किया कि नैट सिवर थोड़ी शॉर्ट है ऑन रन्स, और यूपी के बॉलिंग अटैक में उतनी फायर पावर नहीं है अपार्ट फ्रॉम सोफी एक्ल्स्टन, so this will be a great opportunity for her to get some runs under her belt. So Pratik, what would you like to add about this matchup? Well, from my perspective, for someone like NSB to struggle against spinners occasionally is fine, because she's a batter who heavily relies on her bottom hand in generating the power. And in the Indian subcontinent, such issues will occasionally arise because the ball tends to slow down or turn a little more. It's only that she needs to get to the pitch of the ball and then smack it when the ball is right under her eye, or rock back and make use of the crease to make sure that the ball is short and then pull it into the stands. That's pretty much what I've got. I mean, we've seen enough of NSB and the way she handles spinners. So it's just a talking point for now, and we may also be discussing tomorrow about how she has played the spinners and gotten the best of it as well. From a Mumbai Indians fan perspective, I definitely hope so that that's what happens tomorrow in tomorrow's show. Now let's take a look at the matchup from a from a UP perspective. So Alicia Healy, like we discussed in UP's previous match, has been very tentative against the Pacers lately. और बतौर बल्लेबाज है, और वी नो शी लाइक्स टू अटैक एंड गेट ऑफ टू अ फ्लायर, बट इनिशियली हमेशा से वल्नरेबल रही है वो अगेंस्ट द पेसर्स। उनका जो एवरेज अगेंस्ट पेस है 17.47 है केवल, और पिछले मैच में भी दिल्ली के अगेंस्ट हमने देखा कि उनका विकेट कापने लिया था विद द न्यू बॉल व्हेन द बॉल वाज मूविंग अराउंड, सो हर स्ट्रगल्स विद द न्यू बॉल कंटिन्यू apart from her struggles with the team balance, for sure, but definitely with the new ball. So Julie, what would you like to tell us about how Alicia Healy should be countering the new ball against Shabnim Ismail, Nat Silver Brunt and a Pooja Vastrakar when she faces off against Mumbai today? आज तो काफी मुश्किल होगा मेरे ख्याल से एलिसा हीली के लिए, क्योंकि शबनम इस्माइल जो एक बेहतरीन फॉर्म में रही है, उनका पेस हो या स्विंग हो या जो इंसाइसिव लाइन और लेंथ जिसकी हम बात करते आए हैं, तो काफी मुश्किलें होंगी एलिसा हीली को। तो आई थिंक, एंड एलिसा हीली इज आई थिंक वन ऑफ द प्लेयर्स हु रिलाइज मोर ऑन हर हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जैसे वीरेंद्र सहवाग मेंस क्रिकेट में होते हैं। आई थिंक काफी सिमिलर उनका बैटिंग स्टाइल है, ज्यादा फुटवर्क पे वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, वो टाइमिंग पे ज्यादा रिलाई करते हैं और हैंड आई कोऑर्डिनेशन के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। तो आज अगर उनकी सोच दोबारा वैसी हुई कि प्रोबेबली जस्ट गिव रिस्पेक्ट टू द बोलर्स दैट दे डिजर्व, क्योंकि यूजुअली हम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में देखते हैं कि एलिसा हीली शोज अटमोस्ट डिसरिस्पेक्ट टू एनी ऑपोजिशन बोलर्स। तो आज अगर थोड़ा रिस्पेक्ट दे दे, वो शबनम इस्माइल हो, एनएसबी हो या वस्त्राकर, जिनको हम मिडल ओवर फेजेस में देखेंगे, थोड़ा अगर उनको रिस्पेक्टफुली खेले, सिंगल डबल्स पे फोकस करे, हालांकि पावर प्ले में ज्यादा रन नहीं बना पाएंगे इस अप्रोच से, पर अगर वो उनकी विकेट बचा के रखे, क्योंकि हमने देखा है कि बाकी जो यूपी वॉरियर्स का लाइनअप है, दे आर जस्ट फॉलोइंग लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। तो अगर उनका अप्रोच हो कि आज मुझे पूरे 20 ओवर खेलने, भले ही मैं 100 के स्ट्राइक रेट से खेलूं पहले 6 ओवर में और बाद में कैपिटलाइज करूं, तो वो अप्रोच आई थिंक उनको हेल्पफुल होगा पेस को हैंडल करने में आज मुंबई के खिलाफ। So Pratik, what would you like to add about this matchup? Well, if I was Elisa Healy today, I tell you, I would just want to run away from the situation, because the team is not doing well. Your batting order is collapsing, and on top of which, you've got major issues against the fast bowlers. But on a serious note, I really think that she just needs to spend more time and steady the innings, because the batting that comes after her hasn't lasted for long, and unless she makes a lasting impact and stays there till the very end,
I think it would be difficult for them to again get to a respectable total. Her very own opening partner hasn't lasted for long, and would be interesting to see if there are any changes up there at the top. But for a player like Alisa Healy, there are no technical changes you make as such. She's a very rhythmic player, and if she gets going, she just gets going. You cannot stop her. So I would back her instance and make sure that she plays for a little longer today, so that her team makes it to a respectable total. Definitely, with UP Warriors having lost two of their two games so far, there are definitely some changes on the cards with the likes of Chamari Attaputtu and Danny Viot in the wings. So I'll quickly take your predicted playing 11s for today. Julie, why don't you get us going? Let's start off with Mumbai Indians. So Mumbai Indians, similar, same rather playing 11 as the cliche has been going on this discussion. Why change something that's ain't broken? So same playing 11, opening pair in Haley and Yastika, NSB to follow, Captain Harmanpreet Kaur, Amelia, Pooja, Amanjot, Sajana, Ismail, Balakrishnan, and Saika, of course. So same playing 11 and no changes here. And And what's UP yeah, Warriors, what's your perspective? UP Warriors, I'm thinking of making a couple of changes. I'm not sure whether that is going to happen, but I am placing Chamari Attapar to right at the top to open the batting with Elisa Healy. One for the reason that the opening pair in Vrinda Dinesh and Elisa Healy has not worked, but I'm keeping Vrinda Dinesh in the side as a top order batter. She'll come into bat at number three. I want to give her one more chance because she has the quality, but probably the opening slot has not been suiting her. So Chamari Attapar a lefty and Elisa Healy a righty. So that will serve two purposes: give a new opening pair, international opening pair, the experience of an international opening pair, and a lefty righty combination as well. Then Vrinda at number three, T Mac at four, Shweta at five. I think she has owned this batting position, Shweta Sarawat. Deepti, I'll put her above. I think she has been batting lower down than six. I feel so. Deepti at six, Poonam Khemnar at seven, Eccleston to follow, and I want to include Anjali Sarvani, one more pace bowling option which we did not have in the previous match against when UP Warriors played against Delhi Capitals. So T-Mac and Anjali will be the two pace options. And then the spinners in Gaikwad, Gaur Sultana, I would like to give her one more chance. And of course, Deepti and Sophie Eccleston are the spinners. So these are a couple of changes that I would make. So Kiran Navgiri, I think I'll have to get rid of her in order to adjust Anjali Sarvani here and Grace Harris. I know that will be a tough call if UP Warriors has to make it. But again, if you look at Grace Harris, off spinning option and a batter. Similarly, Chamari Attapar an off spinning option and a batter. So I would like to make those two changes here. So Pratik, what is your ideal playing 11 for both teams today? Well, again, so for the Mumbai Indians, it remains the same. I would not want to dampen anything, and just go on with the winning streak that they've been having. Although I would like for Haley Matthews at the top to show her true power as a batter. All of us have known her as a destructive batter, and someone who gets going at the beginning of it. So I'm hopeful that that happens, and yeah, the same for the rest of it. And what about the UP side? What changes are you making? Well, yeah. So for the UP, I wouldn't make many changes, and I would like to give the batting order that is there few more opportunities. We've known that they've lacked their firepower, but anyways, Alisa Healy and Vrinda Dinesh, and this potentially would be my last opportunity to Vrinda because she's already gotten a couple of chances and has not capitalized. And then Talia McGrath, she struggled against the new ball the last time around, and I'm hopeful that she gets going as well. Then we've gotten Shweta Sehrawat, someone who's done extremely well. Kiran Navgire, I would give her a chance because she's someone who possesses extraordinary abilities, and in terms of power, we've seen her hit a couple of sixers, and if she gets going on that very track, I think it's tough to stop her as well. So Kiran Navgire, Deepti Sharma, Poonam Khemnar, and then Sophie Eccleston, Rajeshwari Gaikwad, Gaur Sultana, and I would bring in Saima Thakur. Okay, sure. So that winds up the predicted playing 11s. So I'll quickly take your predictions for today's match. Julie, why don't you get us started?
The Mumbai Indians, I think, hat-trick of wins probably for the defending champions. And let's see if UP is able to put up a strong fight, then we can expect a exciting contest. But otherwise, I think Mumbai Indians should steal the show. What about you, Pratik? Yeah, again, Mumbai Indians as only because they're coming in with a very good form and the opponents are struggling with their team dynamics. So, a lot of reasons for us to back Mumbai Indians to go on to get this. So, I'm hopeful that Harmanpreet and her go on and conquer yet another match today. So that is all on today's show, and we'll meet you all tomorrow and discuss whether Mumbai Indians successfully continue their title defense or do UP Warriors spill water over their plans. So that's all for today. Thank you guys. Join us tomorrow again for yet another exciting episode of Female Cricket Live.